Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back KG class. This is your English teacher Miss Sadaf, and today we are going to apply the learning we have done for the last two lessons. हाँ जी, हम जो lessons पिछले 2 दिन से सीख रहे हैं, जो sound सीख रहे हैं, उसको practice कर रहे हैं. आज हमने उसको apply करना है. Apply का मतलब ये कि today I will talk less and you will talk more and you will give more input about the sound you have learned. तो आज का जो हमारा topic है in the book says application ऑफ डायग्राफ श. तो जी हाँ टीचर्स, हम श की एप्लीकेशन का आज लेसन करेंगे. स्टूडेंट्स आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड राइट अबाउट एंड स्पीक अबाउट श ऑन देयर ओन. ELOs हमारे वही हैं, रिकग्निशन ऑफ डायग्राफ्स एंड यूज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. दैट मीन्स टीचर्स नाउ यू आर गोइंग टू फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स एंड द साउंड्स दे आर यूजिंग फॉर द वोकैबुलरी sh. Now let's see what is the warm up activity. Yesterday, we worked on our textbook and we were writing and completing the sh sound words. Who remembers these? Yes, so teachers इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लें और इन वर्ड्स को एक दफ़ा रिकॉल करवा लें. उनसे कहें कि अब वो शॉर्ट सेंटेंसेस में बोल के आपको बताएं कि what is this. Maybe they can say this is a ship. This is a blue shark. But you need to tell them to speak in little short sentences so that उनकी spoken भी बेहतर और develop हो सके. So please pause the video. Now teachers, when students are trying to speak in short sentences, तो आपने उनकी spoken पे भी emphasis करना है और कोशिश करनी है कि बच्चे जब भी अब जिस भी object को देखें, either they look at it on a flashcard or they look at on the screen or on the book, or even if they're trying to communicate something to you, they should try to speak in short sentences क्योंकि ये KG class है और अब इनको बोलना आना चाहिए. Because for the past 2 years, since a play group, we are trying to develop their listening, speaking, reading and writing skills. तो ये चारों skills जो है अब इनकी develop होनी चाहिए. So they should be able to at least speak one short or small sentence related to the picture they look at. So this is a picture of a fish. The fish word has a sound sh in the end. Fish. Fish. जी हाँ, इसी तरह टीचर्स आपने मुख्तलिफ फ्लैश कार्ड्स देख के बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है that they should speak. This is a flash card of a sheep. Sheep. जी हाँ, a sheep is an animal. They can speak in their own short sentences and whatever opportunity you give them to speak about. So please pause the video for 3 to 5 minutes. कोशिश करें तमाम बच्चे श के किसी भी एक वर्ड को एक शॉर्ट सेंटेंस में यूज करें एंड देन वी विल बी बैक फॉर द टुडेज टास्क. यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने जो श की साउंड वाले वर्ड्स हैं उनको रिपीट भी किया टीचर के साथ, थोड़ी सी डिस्कशन भी की, कुछ वर्ड्स भी आइडेंटिफाई किए. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू कंप्लीट द पेज गिवन इन योर बुक. और आज आपको डॉटेड श नहीं मिला हुआ, आज आपने खुद लिखना है and you're going to practice and writing those 4 lines. So teachers, this is their individual task that they will do. So make sure that you let students write the sh on the blanks, color and match the given pictures. And for the homework of this lesson, refer to the provided box. Now teachers, sh की sound का तीसरा दिन है. They need to know this sound well and they should be able to identify whenever they hear it. सो डायग्राफ की जो रिकग्निशन है उसका हमारा पर्पस जो है वो तब फुलफिल होगा जब बच्चे उसको सुन के बता दें या लिख के दिखा दें और आपको जो है वो सराउंडिंग में लिखे हुए टेक्स्ट को भी आइडेंटिफाई कर दें कि इट इज़ अबाउट द श साउंड. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव देम 3 to 5 minutes टू कंप्लीट दिस पार्ट ऑफ द पेज बिकॉज इट इज देयर एप्लीकेशन डे. जब पेज को आपने कंप्लीट कर लिया बच्चों, तो अगर आपने कलरिंग नहीं की तो आप इसमें कलरिंग भी कर सकते हैं बिकॉज दीज आर आउटलाइन पिक्चर्स. यू कैन मेक योर पेज लुक कलरफुल. नाउ वंस दैट इज डन टीचर्स, kids now need to practice more about the sh words and they can take help from their parents if they have to make a list of the objects they found of the sh sound at home. For example, उनको अगर अपने shoes मिले so they can take help from their parents or siblings to write the word shoes for them, shampoo for them, shirt for them, whatever they say. So बच्चों से कहें कि वो घर से अपनी एक लिस्ट बना के लाएं ऑब्जेक्ट्स की जो श की साउंड से या तो शुरू होते हैं. समटाइम्स द श साउंड
is in the end or in the middle of the word. So they should be able to identify the sh sound wherever they hear it. So for extra practice on 4 lines, there's a worksheet provided in the link. The teachers are going to download it and give it to you. Teachers, if you are not willing to download it or there's an issue, तो आप इस idea या इस concept को इनको copies पे भी note करके दे सकते हैं ताकि बच्चे इस task को कर लें. The main purpose is कि आज का जो हमारा EL होता है यानी कि श की sound को जो उन्होंने recognize करना था उसको ये अच्छे तरीके से कर लें और इसके बाद इनकी pronunciation भी श के sound के साथ जो है वो बेहतर और उन words के साथ improve कर सके. In the end, as a class activity, revise all the sh words vocabulary, use any medium to reinforce the recognition of the digraph, help students to read words with the help of phonics. Now it is up to you teachers. अब आपने बच्चों को written text सिखाना है जिसमें sh के words हों, उनको ये identify करें, उनको circle करें, उनको कहीं पे लिखें, board पे लिखें, जहाँ पे भी आपको लगता है, because now they should be able to figure out the sound sh. This is KG class, और इसके बाद उन्होंने grade 1 में जाना है और 1 में इनके लिए बहुत सारी reading writing आ जाएगी. इस वजह से अभी इस age और stage पे इनकी phonics के साथ visual recognition और audital recognition होनी बहुत ज़रूरी है. So give them this worksheet also. This can be used as an assessment in the classroom, or you can use this idea to give them to complete the task on the worksheet. These are sh sound words जो कि हम daily basis पे use करते हैं. For example, if we write the sh sound on the first 2 blanks, the word becomes ship. And if we write the last here, it becomes fish. So आपने टीचर्स क्रिएटिव होकर डिफरेंट आइडियाज़ की मदद से बच्चों को कोशिश करनी है कि श की साउंड को वो जब भी सुने तो लिख के दिखा दे और लिखा हुआ देखे तो बोल के बता दे. सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, होमवर्क करना मत भूलें. ब्रिंग द वर्कशीट टू स्कूल एंड इन द नेक्स्ट लेसन आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट डायग्राफ और देखते हैं कि उस डायग्राफ के लिए आप कितना प्रिपेयर्ड होते हैं. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.